Hello, good morning students. Myself Vishal Patel and we are going to learn miscellaneous exercise 2. I think we know all the topic of relation and function. So miscellaneous exercise 2 is the mixing sums of relation and function. So it's question number 1. So that f is a function and g is a not a function, right? You all know the definition of function. Here f of x is equal to x square, where 0 less or equal x less or equal to 3, and f of x is equal to 3x, where x is between 3 to 10. So for each x belongs to 0 to 3, f of x is equal to x square, and for each x belongs to 3 to 10, f of x is equal to 3x. So here the function is called the conditional function. The function is defined for each x where x belongs to 0 to 3 union 3 to 10. That means your x is defined from 0 to 10, but between 0 to t your function is x square, and between 3 to 10 your function is 3x. So at x is equal to 3, f of x is equal to 3 square, that is 9. You can also select when x is equal to 3, f of x is equal to 3x, so 3 into 3 is equal to 9. So here only 3 का रिलेशन सिर्फ only and only 9 के साथ ही है. So f of 3 is uniquely defined. f of 3 is uniquely defined, यानी कि हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी कि आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 and 9 ही है. हैज़ द रिलेशन f is a function. Now we are moving for a function g, the relation g. Relation g is defined. G of x is equal to x square between 0 to 2 and 3x between 2 to 10. So for each x belongs to 0 to 2, g of x is equal to x square. 0 to 2 के बीच में आपका g फंक्शन होगा x square. और for each x belongs to 2 to 10, your function g of x is equal to 3x. Thus, g of x is uniquely defined for each x belongs to 0 to 2 union 2 to 10. But here at x is equal to 2, you have two functions, x square and 3x, but g of 2 is equal to, if we first select x square, then 2 square is equal to 4, and if we select second function 3x, then g of 2 is equal to 3 into 2 6. So here first element is repeat 2 times. The relation 2 का relation 4 के साथ ही है and 2 का relation 6 के साथ भी है. So that's why thus we find that in relation g, two order pair 2 4 and 2 6 exist having the same first element. So g of x is not a function, राइट. सो स्टूडेंट आप एफ ऑफ एक्स में चेक कर सकते हो. आप 0 पुट करोगे 1 2 3 अप टू 10 तक आपको एक यूनिक पेयर मिलेगी जो रिपीट नहीं होगी. बट जी ऑफ एक्स में 2 4 एंड 2 6 ऑर्डर पेयर यानी कि 2 की पेयर रिपीट हो रही है. एंड जी ऑफ 2 इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, हैज़ द रिलेशन ऑफ जी इज नॉट अ फंक्शन. योर क्वेश्चन 1 इज फिनिश. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, find f 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1. Here f of x is equal to x square is given. So first of all you have to find f 1.1 and f of 1. So f 1.1 is equal to 1.1 square. Put 1.1 on behalf of x, so 1.1 square is equal to 121. Now f of 1, put 1 on behalf of x, so 1 square is equal to 1. Now put all the value in our function which we have to find.
So f of 1.1 is 1.21 minus f of 1 is 1 divided by 1.1 minus 1 is equal to 1.21 minus 1 is 0.21 divided by 0.1 is equal to 21 by 10. So your answer is 2.1. Simple. Hence your answer is 2.1. So अगर आपको f of 2 फाइंड करना है तो x की जगह पे 2 पुट करना है, f of 5 फाइंड करना है तो x की जगह पे 5 पुट करना है. So whatever you have to find, put on behalf of x. Now this is a very good question. Find the domain and a function of f of x is equal to x square plus 2x plus 1 divided by x square minus 8x plus 12. So now what is the domain? Domain that means जितनी भी पॉसिबल वैल्यू आप x की जगह पे पुट कर सकते हो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में पॉसिबल वैल्यूज़ उसका सेट. So for a given x belongs to R, f of x is uniquely defined only when x square minus 8x plus 12 does not equal to 0. यानी कि कभी भी आपको रेशनल फंक्शन दिया जाता है यानी कि जो भी आपका डिनोमीटर होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए हमारे मैथ्स की लैंग्वेज में, राइट? बाकी कोई भी वैल्यू चलेगी. सो फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वी मस्ट हैव एक्स स्क्वायर माइनस 8x plus 12 डज नॉट इक्वल टू 0. Now using the splitting of the middle term, x square 8x के दो पार्ट माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 डज नॉट इक्वल टू 0. x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 6 कॉमन, x माइनस 2. So you have a two factor x minus 6 and x minus 2 does not equal to 0. That means x can be never 2 or 6. X does not equal to 6 and x does not equal to 2. So your domain is whole real number excluding 2 and 6. Hence your domain of f of x is equal to होल रियल नंबर माइनस 2 and 6. यानी कि आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो 2 और 6 के अलावा. सो दैट इज़ योर डोमेन. सो डोमेन इज़ योर पॉसिबल वैल्यूज पुट इन योर फंक्शन. सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1. सो आपको पता है कि मैथ्स के अंदर अगर डिवीज़न में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, सेम रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए. सो आप x की जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हो, वो आपका डोमेन. और डोमेन आपके पास होगा तभी आप रेंज फाइंड कर सकते हो. विदाउट डोमेन रेंज इज़ नॉट पॉसिबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ f. सो आप x की जगह पे 1 या 1 से ज़्यादा वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि रूट के अंदर ज़ीरो चलेगा बट नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं चलेगी. सो एफ ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1. सो यू हैव टू सॉल्व x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0. सो x इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1. सो एफ ऑफ x इज यूनिकली डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर और इक्वल टू 1. सो एफ ऑफ x यूनिक डिफाइन होना चाहिए और वो 1 और 1 से ज़्यादा वैल्यू में ही यूनिक डिफाइन होगा. हेंस द डोमेन ऑफ f इज़ 1 to इन्फिनिटिव, क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटिव. वाई? बिकॉज अगर आप 0 पुट करोगे तो योर आंसर इज़ -1. सो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड. अगर आप -1 पुट करोगे देन ऑल्सो नॉट डिफाइंड. सो योर डोमेन इज़ 1 to इन्फाइनाइट. नाउ रेंज ऑफ एफ. सो आप 1 to इन्फाइनाइट की पूरी वैल्यू आप एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा? सो रूट का आंसर आपको पता है कि मैं 1 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही लूँगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा. सो 1 मैं पुट करूँगा तो 1 - 1 0. सो माई मिनिमम वैल्यू इज़ 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ अप टू इन्फाइनाइट. So my range is 0 to infinite. Hence the range of f of x is 0 to infinite. So range is nothing. आपके पास जो भी डोमेन है वो डोमेन फंक्शन में पुट करो और चेक करो कि आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है. मिनिमम आंसर एंड मैक्सिमम आंसर, इट्स कॉल योर रेंज.
राइट. सो आप रफ में भी वो चेक कर सकते हो. नाउ अनदर क्वेश्चन, राइट. Find the domain and range of the real function f defined by f of x is equal to modulus x minus 1. So here in modulus function there is no limitation, there is no restriction to put any value. So आप मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो x के जगह पे. दैट ऑल आर possible, uniquely defined. So modulus x is equal to x if x greater or equal to 0 and minus x if x less than 0. It's your modulus function. Whenever asked in your exam, modulus function is a conditional function, is positive x if x greater or equal to 0 and negative x if x less than 0. Here f of x is equal to x minus 1. So your f of x is become x minus 1 positive where x greater or equal to 1 and negative when less than 1, right. So negative, so you have to just change the sign of x minus 1 to convert 1 minus x when x less than 1. So f of x is uniquely defined real number for all x belongs to R. जैसे कि मैंने कहा आपको कि मॉड्यूलस यूनिकली डिफाइन है कोई भी वैल्यू के. अगर डिवीज़न होता तो आपको सोचना पड़ता, रूट है तो आपको सोचना पड़ता, बट मॉड्यूलस फंक्शन इज यूनिकली डिफाइंड इन होल रियल नंबर. हैंस द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ इज आर. सो रियल नंबर इज योर होल डोमेन. नाउ यू हैव टू फाइंड द रेंज. सो पुट ऑल द वैल्यू ऑफ रियल नंबर इन योर फंक्शन एंड चेक आपका आंसर क्या आता है, मिनिमम आंसर क्या आता है, मैक्सिमम आंसर क्या आता है. आप सबको पता है कि मॉड्यूलस का आपका आंसर ऑब्वियसली ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा. सो योर आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर. ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. हैंस द रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ is 0 to infinite. Hence the range of real function f is 0 to infinite.